morning, students. Myself, Dr. Pooja Bhardwaj, Associate Professor, School of Information Technology, IMS Noida. Today, I am here to give you a clear visibility and clarity of the more specific details in organizational behaviors models. So, in previous video, I also explained you all the introductory part of organizational behavior and its characteristics, importance, and all the basic concepts of organizational behavior. So let's start the model. The organizational behaviors consist with the organizational behavior systems. Behavior systems means कि कैसे organizational model decide करता है. Model क्या होता है? जिसके basis पे हम कोई भी काम, कोई भी goal पूरी तरह से achieve करते हैं. उसको हम एक तरह का structure भी बोल सकते हैं. Model के अंदर structure भी आता है. Model design a structure of anything. So first of all, the management's philosophy, because as we all know that ultimate motive क्या होता है? To achieve the desired goal or pre-decided goal by the management. So in this, the top on the management's philosophy, values, vision, mission, and goals, etc. It's divided into three parts: that organizational culture, it creates organizational culture, again organizational culture drives, and social environment. अब organizational culture कहाँ से drive हो रहा है? आप यहाँ देख सकते हैं कि social environment and organizational culture create a organizational culture itself. दोनों मिलके बनाते हैं. Then again, organizational cultures promote to the leadership, communication, group dynamics, etc. That followed by the quality of work life. Quality of work life means कि जब आपके पास लीडरशिप अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका ग्रुप डायनेमिक्स बहुत अच्छा है, आप सबसे मिलजुल के काम करते हैं, तो आपका क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ विल बी बैलेंस्ड. वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होगा एंड यू फील मोर मोटिवेटेड. और जब आपका QWL मींस क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छा है, यू आर सेटिस्फाइड विद दिस, देन यू फील मोटिवेटेड टुवर्ड्स. तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं. और जब व्हेन यू आर फील मोटिवेटेड, then your outcome, obviously your performance, your employee satisfactions, your personal growth and development will come with a fly colors. बहुत ही अच्छे तरह से वो आगे productive way में outcomes आता है. Now here we discuss the 5 models of organizational behavior. In this, the first one is autocratic. Autocratic, all the 5 models of organizational behavior we discuss on the different type of basis, that is basic of model, managerial orientation, employee orientation, employee psychological results, employee needs meet, and performance result. Autocratic means, as it's clear, it's very much clear with this name, that the power. Autocratic means power होता है, इसका basic authority होता है, obedience by the employee. Employees में obedient होते हैं, बहुत dependence होते हैं boss के ऊपर. जो boss कहेगा उसी के accordingly वो काम करते हैं. Actually the employee wait for the orders from their bosses and do accordingly. Substance and the performance results is minimum. Obviously जब आप किसी चीज का वेट करते हैं तो आप उसी को करते हैं काम को जो आपसे कहा जाता है. आप अगर उससे ज्यादा भी कुछ जानते हैं तो you don't allow to do the work according to yourself. You have to do according to your bosses only. That is the autocratic model of organizational behavior. Hostile, in this the basic of model is economic resources. Economic resources means capital, लैंड है ना, जो आपको प्रोडक्टिविटी देती हैं इकोनॉमिकली, मतलब कैपिटल्स में मॉनेटरी रूप से. तो इसका मैनेजरियल ओरिएंटेशन भी क्या होता है? पूरी तरह से मनी होता है, कैपिटल होता है. सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन क्या होता है इसमें? कि उनको सिक्योरिटी फील होती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक वेजेस, सैलरीज तो हैं, साइमल्टेनियसली उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, बोनस मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है, शेयर्स मिलते हैं. डिपेंडेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन पे पूरी तरह से डिपेंड करता है मॉडल. सिक्योरिटी होता है, एम्प्लॉय नीड्स मीट करती है कहाँ पर? कि दे फील सिक्योरिटी, दे फील सिक्योर्ड इन दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल. एंड कंपैशन रिजल्ट्स क्या होता है इनका? कि दे आर पैसिव कॉपरेशन. इनका पैसिव कॉपरेशन मतलब दे आर ऑलवेज कोऑपरेटिव विद each other. Then third type of organization model is leadership, supportive. In supportive, the basic of model is leadership. लीडरशिप जब होता है तो आप अकेले लीडर बनते हैं तो वो ऑटोक्रेटिक लीडर हो जाता है, एंड दैट टाइप इज ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. बट इन सपोर्टिव में क्या होता है कि लीडर वर्क्स विद
द एम्प्लॉयज, है ना, उनके साथ मिलके काम करते हैं, उनके सपोर्ट से काम करते हैं, तो जॉब परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी हो जाती है और उनका ओरिएंटेशन जॉब परफॉर्मेंस की तरफ रहता है एम्प्लॉयज का कि हमें ये टास्क करना और अच्छे से अच्छे करके करना है। देन एम्प्लॉयज का साइकोलॉजिकल रिजल्ट, दे आर विलिंगली पार्टिसिपेटिंग इन ईच एंड एवरी वे, हर तरह से वो पार्टिसिपेटिव होते हैं, पार्टिसिपेशन होता है उनका। और किस लिए होता है, क्योंकि स्टेटस और रिकॉग्नाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर वर्क, their skills are available in the supportive type of organizational behavior. Performance result, work and drives, है ना, ये सब। then collegial, fourth one is collegial, it's a type of partnership type का मॉडल होता है where all the persons work as a team, एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। हर एक इंडिविजुअल का अपना एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है। इफ there are 4 partner in an organization, so each and every partner has their different type of responsibility towards the organizations, and each and every individual partner responsible for their self behavior, self discipline as well, and they feel self actualization too. एम्प्लॉय की नीड्स क्या होती है उसमें कि वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि यस दिस इज टाइप ऑफ वर्क व्हाट एक्सपेक्टेड बाय मी, फ्रॉम मी, मेरे से इस तरह के काम की उम्मीद की जाती है या मुझे ये करना चाहिए, आई सपोज टू डू लाइक दिस, तो वो वैसे ही करते हैं। मॉडरेट एंथुसियाज्म, लास्ट but not the least, that is the system model of organizational behavior. In this type of model of organizational behavior, the base of this model is trust, community meaning. ट्रस्ट होता है एक दूसरे के ऊपर, केयरिंग कंपेशन होता है, एक दूसरे का केयरिंग करते हैं, साइकोलॉजिकल ओनरशिप, हर एक को ये फील होता है, फील कराया जाता है एम्प्लॉय को कि यस यू आर ऑल्सो अ पार्ट, यू आर ऑल्सो अ ओनर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाई वो सेल्फ मोटिवेटेड फील करते हैं। उनका जो एम्प्लॉय का जो नीड्स होता है वो बहुत ही वाइड हो जाता है, बहुत ही एक्सक्लूसिव हो जाता है कि उनको बहुत कुछ मिलता है उसमें, तो जिसके लिए वो मोटिवेशन होता है, उनको पैशन होता है काम करने का आउटकम में, और कमिटमेंट, तो और हमेशा वो कमिटेड रहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो दीज आर द 5 मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नाउ सोशल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. In this, a social system is a complex, as we all know that a social system is a complex system of human set. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स हैज देयर ओन कल्चर, ओन सोशल सिस्टम एंड इंटरेक्टिंग इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से सब एक दूसरे से मिलते हैं। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, the social system includes all the people in it and their relationship to each other and to the outside world. The behavior of one another can have an impact either directly or indirectly on the behavior to the others. Also, the social system does not have boundaries. It exchanges goods, ideas, culture, etc. within the environment around it. सोशल सिस्टम में क्या है, जब हर इंडिविजुअल अलग अलग जगह से आता है, अलग अलग कल्चर से आता है, तो उनको क्या होता है, वो एक मिल के काम करना है, बट all different type of individual has to work in a organizational culture which is defined by the management or the organizations. They can obviously exchange their goods, ideas, culture, etc. between each other, but they doesn't have boundaries. उनको social system की कोई boundaries नहीं होती, जो भी उनके environment चारों तरफ है। Here we can understand the system और नेस्टेड सिस्टम विद इन द सोशल सिस्टम। एक सोशल सिस्टम के अंदर भी एक नेस्ट होता है जो एक नेस्टेड सिस्टम कहलाता है, इन विच वी कैन सी हियर दैट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड सिस्टम। We can here understand the social system by this diagram, where in central as a U, and Twitter, blog, Facebook, LinkedIn, Delicious, SlideShare, ना ये सब क्या है? These all are the social system where you can express, you can expand yourself by your information exchanging, your knowledge exchanging, your ideas, your creativity, and takes also the new ideas and creations. Next is culture. What is culture? Culture basically depends upon to the roots of any individual. कहाँ से आप हैं? It culture defined as a biological as well as socially atmosphere of a person.
जेनेटिकली भी आपके अंदर आता है, रिलीजियस कल्चर भी होता है, सोशल कल्चर भी होता है ना. सो कल्चर इज द कन्वेंशनल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट encompasses beliefs, customs, knowledge, and practices. It influences human behavior even though it seldom enters into their conscious thoughts. People depends on culture as it gives them stability, security, understanding, and the ability to respond to a given situation. This is why people fear changes. They fear the system will become unstable. Their security will be lost. They will not understand the new processes and they will not know how to respond to the new situation. कभी कभी क्या होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अभी हमने ये समझा कि कल्चर क्या है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के बिलीव्स है, कस्टम है, नॉलेज और उनकी प्रैक्टिसेस का एक पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमें काम करना होता है. सो द ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस बाय द कल्चर व्हेन दे एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस. पीपल डिपेंड्स ऑन द कल्चर एट क्यों डिपेंड करते हैं उस कल्चर पे, क्योंकि अगर वो कल्चर फॉलो करते हैं तो इट गिव्स देम द स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी गिवन सिचुएशन. दे ऑलवेज हैव अ फियर. यही कारण है कि लोग एम्प्लॉयज में और पर्सन्स में एक फियर होता है किसी भी चीज को चेंज करने का. क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम चेंज होगा तो वो उनको एक अनस्टेबल देगा, है ना. सिस्टम अगर चेंज होता है तो वो अनस्टेबिलिटी देता है, सिक्योरिटी उनकी खत्म हो जाती है, और वो अंडरस्टैंड करने में नए प्रोसेस को किस तरह से नई सिचुएशन को रिस्पॉन्स करना है, उनको उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. नाउ हाउ टू सेव योर जॉब. किस तरह से हम अपनी जॉब को सेव कर सकते हैं, ये किससे समझ सकते हैं हम, विच कैन बी सेव अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम दैट हाउ टू सेव. The culture is only the thing, the organizational culture is only the way to save our job. If we follow the organizational culture, we feel secure, we feel stable there, है ना. हमेशा सिक्योरिटी फील होता है. क्यों? क्योंकि वो अपनापन आता है आपके अंदर, आपको लगता है कि ये दिस इज, आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, आई एम ऑल्सो अ ओनर ऑफ दिस. सो organizational culture saved your job or give you security in different types, that is amplified by the behaviors to leaders, embedded in the network of organizational practices, shared beliefs and values, and assumptions held by members of an organization, visible in the way that works get done on a day-to-day basis, evident in the behaviors of individual and groups. हमेशा कल्चर क्या होगा कि ये इन सारी चीजों से आपको सपोर्ट करता है, आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपके जॉब परफॉर्मेंसेस के लिए, आपको ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो एविडेंट भी करता है बिहेवियर्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग इंडिविजुअल्स का किस तरह का बिहेवियर होगा. इट डिफाइंड और एविडेंट बाय द कल्चर ओनली. नेक्स्ट इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स कैन बी नोन. कैसे आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को पहचानते हैं, जाना जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैन बी अ सेट ऑफ की वैल्यूज, assumptions, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉर्म्स दैट इज शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, तो कल्चर तो हमेशा वैल्यूज और एजम्पशंस पर ही डिपेंड करता है. वॉट एवर मैनेजमेंट डिसाइडेड और प्री डिसाइडेड गोल्स, वैल्यू, एथिक्स, बिलीव्स, दैट बिकम्स अ कल्चर इटसेल्फ. सो अंडरस्टैंडिंग द नॉर्म्स एंड शेयर बाय द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसको जो भी हम नॉर्म्स है, जो भी हमारे काम करने का तरीका है, रूल्स रेगुलेशन जो मेंबर के साथ शेयर किया जाता है, उससे हम पहचान सकते हैं कि दिस इज द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Organization values are fundamental beliefs that an organization considers to be important, that are relatively stable over time, and they have an impact on employee behaviors and attitude. Organization norms are shared standards and define what behaviors are acceptable and desirable within the organization. With whatever norms are shared and standards which define that what type of behaviors are acceptable or desirable within the organization by you, that is also a sign of culture. Shared assumptions are about how things are done in the organizations.
the way, the method, the procedure to do the task is also a sign to know that culture or the type of culture in the organization. Understandings are coping with internal and external problem uniformly. Now, levels of culture. Here are two levels of culture. First is level 1 is visible and level 2 is invisible. Invisible that can be seen or surface, है ना, जो हम देख सकते हैं, like dress code, office layout, symbols, slogans, ceremonies, etc. For example, like Domino's, Pizza Hut, KFC and different type of same outlets है ना. वहाँ पे क्या होगा, जितना भी सब कहीं पर भी आप जाएंगे किसी भी आउटलेट पे, सबका ऑफिस का लेआउट एक सा होगा, कलर कॉम्बिनेशन एक सा होगा, ड्रेस कोड एक सा होगा, स्लोगन सेम होता है, सेरेमनीज सेम होता है, लाइक मंथली एम्प्लॉय, एनुअल अवार्ड्स, लॉन्ग सर्विस, बर्थडे एक्सेट्रा. ये सब चीजें क्या है, दीज आर द visible organizational culture. And in invisible there are so many things, that is story about the people performance, symbols in this, flag, trademark, logos, etc. Corporate mission statements, recruitment selection, whatever method used to recruitment and selection, that is also defined or can be find out the culture type. Fairness in treatment, social equality, risk-taking in business deal, formality in approach, discipline, autonomy for departments, responsiveness to communication, and empowerment of staff. These are the two types of invisible and visible type of organizational cultures factors. By the help of these, we can actually know that what type of culture the organization have. Now the approaches of organizational behavior. The approaches of organizational behavior in this, first one is human resource. Human resource is there for support employees growth and development, simultaneously the management growth as well. Employees growth and development and increased and supported. कंटिजेंसी मीन्स कि जब भी कोई काम कर रहे हो आप उसमें कंटिजेंसी होना चाहिए, एक सा काम होना चाहिए, यानी कि आज अच्छा है कल खराब है फिर अच्छा, इस तरह का आप फ्लिप फ्लॉप नहीं होना चाहिए. डिफरेंट मैनेजरियल बिहेवियर आर रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट एनवायरमेंट्स फॉर इफेक्टिवनेस. अलग अलग एनवायरमेंट के लिए अलग अलग बिहेवियर होना जरूरी है. मैनेजमेंट का मैनेजरियल डिसीजंस अलग अलग होने जरूरी है. क्यों? क्योंकि सभी को हमें एक से लेवल पर लेकर चलना है, हर एक का फुल इफेक्टिवनेस से काम आउटकम लेना है. तो जिसके लिए द मैनेजरियल बिहेवियर्स आर रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट एनवायरनमेंट फॉर द मैक्सिमम इफेक्टिवनेस. Result oriented outcomes of organizational behavior programs are assessed in terms of their efficiency. System. All parts of an organization interact in a complex relationship. Now, the limitations of organizational behavior. Organizational behavior also have some type of limitations in which people who lack system understanding and become superficially infatuated with OB may develop behavioral bias. जिनको पता ही नहीं है, जिनको सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा और वो सुपरफिशियली सोचकर अपना ही एक नया बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, तो वो बायस हो सकते हैं, वो एक बायस बिहेवियर डेवलप कर सकते हैं. उनका व्यू पॉइंट नैरो हो सकता है, नैरो व्यू पॉइंट दैट एम्फसाइज सेटिस्फाइंग पीपल or employee experiences while overlooking the broader system of the organization in relation to the all the publics. Then second is the law of diminishing return. Whenever the law of diminishing return tells us that when we expect the over and above from the limit or from the maximum output of someone, then the output becomes after that is the declining, वो नीचे की तरफ आने लगता है. Same here, the tendency for a continuing application of efforts or skill towards a particular project or goal to decline in effectiveness after a certain level result has been achieved. एक लेवल पे अचीव करने के बाद अगर हम और ज्यादा करते जाते हैं तो वो क्या होता है, डेक्लाइनिंग होता है, नीचे की तरफ उसको प्रैक्टिस में अचीव होने लगता है. Overemphasis on as valid organizational behavior practice may produce negative result and it also can becomes a negative result. वो negative result भी दे सकता है अगर हम ज्यादा उससे
जरूरत से ज्यादा, किसी की कैपेसिटी से ज्यादा उससे हम डिमांड करते हैं. एट सम पॉइंट इंक्रीज ऑफ अ डिजायरेबल प्रैक्टिस प्रोड्यूस डिक्लाइनिंग रिटर्न, इवेंचुअली नेगेटिव रिटर्न, है ना. अगर डिजायरेबल प्रैक्टिसेस ज्यादा है आपका और उससे भी ज्यादा आप मांग रहे हैं तो वो डिक्लाइनिंग रिटर्न देगा और इवेंचुअली वो धीरे धीरे नेगेटिव रिटर्न की तरफ चला जाएगा. सेकेंड इज, थर्ड वन इज अनएथिकल मैनिपुलेशन ऑफ पीपल. Unethical means knowledge and techniques can be used to manipulate people unethically. People's का, employees का गलत तरीके से यूज करना, इस्तेमाल करना, टेक्निक्स का, नॉलेज का उनकी अलग ढंग से अनएथिकली यूज करके, गलत तरह से काम करके आप अपने रिजल्ट्स को लेना. People who lack ethical values could use people in unethical ways. The philosophy of OB is supportive and oriented towards human resource, seeks to improve human environment and help people grow towards their potential. Ethical leadership principles such as social responsibility, open communication, cost benefit, etc. Now, continuing challenge. अब challenges क्या क्या हैं? बहुत सारे challenges होते हैं ना OB में भी. तो seeking quick fixes. अगर आप कोई काम बहुत जल्दी ऐसा है कि you feel a attempt to do this work within a time limit or before the time limit, but आपको लगता है कि उसमें time ज्यादा है, तो आपको rapid action देना पड़ता है. Are we tempted when pressure to seek rapid solution, है ना? क्या आप वाकई ऐसा challenge है आपके साथ कि आप जल्दी से काम करके देना है, तो एक feel करते हो pressure काम का, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो भी एक लिमिटेड है, लिमिटेशन से चैलेंज है. वेरीफाइंग एनवायरमेंट्स. कैन द आइडियाज दैट हैव बीन डेवलप्ड एंड टेस्टेड endure with equal success under the new conditions. अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग टेस्टेड एंड्योरेंस है या नहीं है, वो इक्वली सक्सेस दे रहे हैं, जबकि जो पहले एनवायरमेंट में था सेकंड एनवायरमेंट में भी सेम हमारा आउटकम आ रहा है या नहीं आ रहा है, आइडियाज उतने डेवलप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. तो दीज आर द चैलेंजेस. डेफिनेशन कंफ्यूजन. कंसिडर एज रिलेटिवली न्यू डिसिप्लिन, can on OB in clearly define its field of students and application. Earlier क्या होता था, OB को हम सिर्फ एक स्टडी का ऑप्शन समझते थे, सब्जेक्ट समझते थे, डिसिप्लिन समझते थे. बट nowadays in a modern area it is a field of student and application in the organizations to make their growth at a rapid path. So this is all about the model of organizational behavior. This is all about from my side. Thank you class. Thank you, students. Good luck. Have a nice day ahead.